Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to my channel. So here, my childhood, which is an extract from APJ Abdul Kalam's autobiography, Wings of Fire. It describes the childhood days of Kalam in a very simple but vivid manner. Kalam talks about the people, the incidents and the experiences that he had during his childhood, which shaped his adult life. Written in a very humble and a modest manner, the abstract is very inspirational. In this, we will discuss about, we already had discussed about Kalam, who was born in a middle class Tamil family and Rameswaram. He had a secure childhood, both maternally as well as emotionally. His parents, Janul Abdin and Ashiama, was very generous people. In spite of their limited means, Kalam inherited the values of honesty, self-discipline, goodness, and kindness from his parents. Kalam's family was rather big, but their kitchen fed far more outsiders than all his family members put together. Their ancestors' house was a large Pakka house which did not have any inessential comforts and luxuries. However, Kalam's father made sure that all necessities like food, medicine, and clothes were provided to the family. So, here, after discussing about little bit summary, now we are going to start thinking about the text. So, answer these questions in one or two sentences each. So, our first question: where was Abdul Kalam's house? Yeah, absolutely right. The answer is Abdul Kalam's house was on Moscow Street in Rameshwaram. Good. रामेश्वरम में एक मस्जिद वाली गली में उसका घर हुआ करता था. Nextly, we do have question number 2. What do you think Dhinmani is the name of? Give a reason of your answer. I think Dinmani is the name of a newspaper. It is the name of a newspaper because Kalam says that when his brother-in-law would tell his stories of the war, जब उसको उसका जो ब्रदर इन लॉ थे, जब वो उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरीज सुनाया करते थे, he would later try to trace it in the headlines of Dinmani. तो वो बाद में उस न्यूज़ को दिनमानी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी ट्रेस किया करता था. दिस implies दैट दिनमानी वुड हैव बीन अ न्यूज़पेपर. तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि दिनमानी was a name of a newspaper. I hope you will understand. Got it? Nextly, we do have question number 3. Who were Abdul Kalam's school friends and what did they later become? So who were Abdul Kalam's friends? Ramanand Shastri, Arvinandan, and Shiv Prakashan were Abdul Kalam's school friends. So these three are his school friends, and Ramanand Shastri took over the priesthood of his Rameswaram temple from his father. रामानंद शास्त्री ने अपने पिताजी लक्ष्मण शास्त्री से रामेश्वरम टेम्पल की जो प्रेस्टहुड का काम था वो ले लिया था, पुजारी बन गया था वो वहां पर. Arvinandan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. Arvinandan was a member, was a business executor who are completely involved
फॉर अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट अरेंज किया करता था फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों के लिए। एंड लास्टली, last but not least, Shiv Prakashan became a catering contractor for Southern Railways. शिव प्रकाशन एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया था फॉर साउथर्न रेलवेज। साउथ में जो रेलवे साइड के जो डिपार्टमेंट थे वहां पर उसने केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था शिव प्रकाशन ने। Nextly, in question number 4, we do have how did Abdul Kalam earn his first wage? अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई कैसे कमाई थी? How did he earn? So answer is Abdul Kalam earned his first wages by catching bundles of newspapers. Catch करके bundles of newspaper because at that time Second World War was broke out in 1939 और वहां पर जो ट्रेन है ना वो रामेश्वरम में रुकती नहीं थी। सो चलती ट्रेन से उसको बंडल्स को कैच करना होता था न्यूज़पेपर के, जो रामेश्वरम रोड पे रामेश्वरम और धनुक सोदी के बीच में रुकती थी कहीं पे। जो रुकती क्या थी ट्रेन, मूविंग मूविंग ट्रेन रहती थी इन द मूविंग पोजीशन, बट वहां से वो थ्रो करते थे और वहां से उसको कैच करनी होती थी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता था। तो ये उसका काम था। तो इस काम के लिए उसको फर्स्ट अर्निंग जो है वो मिली थी। ओनली वर्कड एज अ हेल्पर for his cousin brother Samsudin. Now we do have question number 5. Had he earned any money before that and in what way? क्या उसने इससे पहले कभी पैसे कमाए थे और किस तरह से कमाए थे? Before catching the bundles and distributing them and before this earning, had he earned any money? Yes, he had earned money before that too. उसने उससे पहले भी पैसे कमाए थे। He used to collect tamarind seeds. वो हल्दी के दाने, बीज, सरसों के बीज को इकट्ठा किया करता था and sell them to a provision shop on Moscow Street. और provision shop पे Moscow Street में जो provision shop थी वहां वो उसको बेच देता था। A day's collection would let him earn one आना, और उस पूरे दिन का जो कलेक्शन होता था उससे उसकी कमाई हो जाती थी एक आने की। दैट वाज अ आना वाज अ इंडियन करेंसी at the time, it was a currency. Now we do have some other questions, so answer each of these questions in a short paragraph about 30 words. So we do have the first question: how does the author describes his father, his mother, and himself? So, firstly, about his father. The author describes his father as honest and self disciplined. Author ने अपने father के बारे में describe करते हुए बताया that he was an honest and self disciplined person, and his father used to avoid unessential comforts and luxuries. उसके जो पिताजी थे वो यूजुअली क्या किया करते थे, जो इनएसेंशियल कंफर्ट्स लग्जरीज की चीजें थी ना उनको अवॉइड करते थे। द ऑथर टेल्स दैट हिज फादर नेवर हैड अ फॉर्मल एजुकेशन ऑफ मच वेल्थ। उसके फादर के पास कोई ज्यादा शिक्षा भी नहीं थी और कोई ज्यादा पैसे भी नहीं थे, बट ही पोजेस्ड ग्रेट विजडम एंड वाज वेरी जेनरस। लेकिन वो उनके पास थी ग्रेट विजडम, बहुत अच्छी बुद्धि, एंड ही वाज सच अ वेरी जेनरस पर्सन, बहुत ही जेनरस पर्सनालिटी के पर्सन थे। नाउ अबाउट हिज मदर, द ऑथर describes his mother as an ideal helpmate to his father. उसने अपनी ममा को एक आइडल हेल्पमेट की फॉर्म में माना था।
She used to feed a lot of outsiders along with her family members. She used to feed a lot. शी यूज टू फीड वो खिलाया करती थी अ लॉट ऑफ आउटसाइडर्स बाहर के लोगों को भी अलॉन्ग फैमिली मेंबर्स के साथ साथ बाहर के लोगों बहुत सारे लोगों को भी खाना खिलाया करती थी and about himself. So the author describes himself as a short boy with distinguished personality, distinguished looks, born to tall and handsome parents. ऑथर ने खुद को डिस्क्राइब किया कि वो बहुत ही छोटी शॉर्ट हाइट का बॉय है जिसकी एक विचित्र सी जो है वो लुक्स है बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स जिसका जन्म एक बहुत ही लंबे और सुंदर माता पिता के द्वारा हुआ है नाउ क्वेश्चन नंबर 2 what characteristics does he say he inherited from his parents कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हम कहते हैं कि उसको अपने पेरेंट्स से विरासत में मिली थी as we have already discussed the same point in our chapter also he says that he inherited honesty and self discipline from his father he says वो कहता है कि सच में उसकी जो ये honesty like you can say that which one is coming like diary entry all other thing also so in that way we can describe APJ Abdul Kalam but here according to the question we do have the characteristics that he already inherited from his parents so he says that he inherited उसको honesty and self discipline अपने father से मिला है and faith in goodness and faith in blackness anytime in the next core of the heart he do have faith in goodness and deep kindness from his mother Ashiyama. Now question number 7. Discuss these questions in class. Okay, then we do have faith in goodness and डीप काइंडनेस जो उसको अपनी मदर से मिली थी आशियामा से फादर से उसको ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन मिला था और मदर से गुडनेस faith in goodness and deep kindness okay I hope you will understand this nextly discuss these questions in class with your teacher and then write down your answers so where we do have the first question on the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of segregation of different social groups, says the author. On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स के अकॉर्डिंग जो एक रामेश्वरम टाउन था वो एक छोटा सा सामाजिक सा एक पार्ट था उन सबका ये ऑथर ने कहा था सो विच सोशल ग्रुप डज ही मेंशन एंड वर दीज ग्रुप्स इजीली आइडेंटिफिकेबल फॉर एग्जांपल बाय द वे दे ड्रेस्ड कौन सा ग्रुप था वो द सोशल ग्रुप्स दैट ही मेंशन आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्योंकि उसने बताया था उसके जो 3 फ्रेंड्स थे दे ऑल आर हिंदूज एंड ओनली ही वाज फ्रॉम द मुस्लिम फैमिली सो रामेश्वरम in Rameswaram, we can say that we do have different social groups, like he mentions, are Hindus and Muslims. Yes, these groups were easily identifiable by their dressing, tradition, and culture, etc. उनके ग्रुप्स को सच में बहुत इजीली आइडेंटिफिकेबल उनके ड्रेस के अकॉर्डिंग किया जा सकता है अब्दुल कलाम टू वियर अ कप to wear a cap on his head वी कलाम हमेशा से ही अपने सिर पर एक कैप जो है वो पहने रखता था एंड रामानंद शास्त्री wore a scared thread
और रामानंद शास्त्री था। उनकी मतलब ड्रेसिंग सेंस है, उनके अटायर से पता चल रहा है, लाइक दे आर आइडेंटिफिकेबल बाय देयर ड्रेसिंग ट्रेडिशनल एंड कल्चर, बिकॉज कलाम यूजुअली वियर a cap on his head which identifies him as a Muslim, and Ramanand Shastri wore a scared thread, एक पवित्र धागा जो है उसने बांधा हुआ था। Nextly in part 2 we do have, were they aware only of their differences, or did they also naturally share friendships and experiences? Were they aware, क्या वो aware थे only of their difference, or did they also naturally share friendships and experience? वो aware थे कि उनके बीच में एक difference है, या वो naturally अपने friendship को और अपने experience को share कर रहे हैं? They know about their differences, so they were not aware only of their differences. वो सिर्फ इसी बात से अवेयर नहीं थे कि उनके बीच में उनकी कास्टिज्म के अकॉर्डिंग डिफरेंस है। दे ऑल्सो नेचुरली शेयर फ्रेंडशिप्स एंड एक्सपीरियंसेस, नेचुरली वो अपनी फ्रेंडशिप्स को और एक्सपीरियंस को शेयर किया करते थे। कलाम्स मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोपेट एज बेड टाइम स्टोरीज। उसकी दादी और उसकी मम्मा अक्सर उसको रामायण की बेड टाइम स्टोरीज, लाइक रात को सोते हुए सुनने वाली स्टोरीज के रूप में उसको रामायण के किस्से सुनाया करती थी। एंड ऑल हिज फ्रेंड्स बिलोंग टू ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिलीज, उनकी सभी फैमिली मेंबर्स जो थे वो प्रॉपरली ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से रिलेटेड थे। ड्यूरिंग द एनुअल सीता रमन कल्याण, सो वो सारे जो थे उसके फ्रेंड्स वो सभी ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। ड्यूरिंग द एनुअल सीता राम कल्याण सेरेमनी, his family would arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple of the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirath, which was near his house. वो कह रहे हैं कि एनुअल सीताराम कल्याणम सेरेमनी के दौरान उसकी फैमिली ने सभी बोट्स अरेंज की थी एक स्पेशल प्लेटफॉर्म पे, ताकि मूर्तियों को आसानी से मैरिज साइट पर पहुंचाया जा सके, क्योंकि उनका जो घर था वो वहीं पास में ही था। Nextly, we do have point 3. The author speaks both of the people who were very aware of the differences among them and those who tried to bridge their events. Can you identify such people in the text? Okay, so the author speaks, author बोलता है both of the people who were very aware of the differences, उन सभी लोगों के लिए जो पूरे अवेयर हैं अपने डिफरेंसेस को लेकर, who tried to bridge these differences, जो इन differences को पार करना चाहता है, कोशिश कर रहा है। Can you identify such people in the text? Okay, then we do have, the author speaks both of the people who were very aware of the differences among them. Author ने वो कहा था that to send both of the people discuss among them, and then who try to bridge these differences, और उन लोगों के लिए जो कोशिश कर रहे हैं डिफरेंसेस को अपनी लाइफ से निकालने की। यस, वी कैन आइडेंटिफाई सच पीपल इन द टेक्स्ट, हम ऐसे लोगों को भी पहचान कर सकते हैं। लाइक उनका जो टीचर था जिसने उसको उसकी सीट से हटा के पीछे बिठा दिया था, दैट person was completely not able to try to bridge these differences. And from this chapter, if we are if I'm not wrong, the main uh, the we can say that the proper personality who actually wants to remove these differences, his science teacher Subramaniam Iyer, he only the person who tried to breach these differences. So we can identify such people in the text easily, like the new school
द न्यू स्कूल टीचर जिसने उनके बीच में एक पॉइजन क्रिएट किया था कि मुस्लिम और हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली के बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते. एंड शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ ऑल्सो वर वेरी मच अवेयर ऑफ दीज डिफरेंसेस. उनको भी इन डिफरेंसेस के बारे में पता था. बट शिव सुब्रमण्यम अय्यर, लक्ष्मण शास्त्री ट्राई टू ब्रिज दीज डिफरेंसेस. लेकिन ये दो पर्सनालिटी हैं हमारी उसमें चैप्टर में. शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो उसका साइंस टीचर था, एंड रामानंद शास्त्री के फादर लक्ष्मण शास्त्री, they try to bridge these differences. Nextly, we do have the question, part number 4. Narrate two incidents that show how differences can be created. कोई भी दो difference events बताओ जिससे लगता है कि हम mindset को change कर सकते हैं. Two incidents that show how differences can be created and how they can be resolved. कि difference कैसे create होते हैं और कैसे solve होते हैं. So when Lakshman Shastri got to know about the way the new school teacher had made, जब लक्ष्मण शास्त्री को पता चला कि जो न्यू टीचर आया वो किस रास्ते से काम कर रहा है, and had made कलाम sit on the back bench because he was a Muslim, उसने कलाम को सिर्फ ये कह के बेंच पीछे वाले बेंच पे बिठा दिया कि वो एक मुस्लिम है. He asked the teacher to apologize or quit the school. लक्ष्मण शास्त्री के द्वारा कहा गया उस अध्यापक को कि या तो वो माफी मांगे या फिर वो स्कूल को क्विट कर दे, छोड़कर चली जाए, छोड़कर चला जाए. द न्यू टीचर not only regretted his behavior but also was reformed by Lakshman Shastri's strong sense of conviction. वो न्यू टीचर ना ही उसने अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगी बल्कि उसने स्ट्रॉन्ग सेंस के साथ लक्ष्मण शास्त्री को खुद को बदलने का एक वादा किया. इंस्टेड ऑफ दैट, कलाम्स साइंस टीचर सुब्रमण्या भारती all asked कलाम to his home for a meal. इसके विपरीत जो उनके साइंस टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने कलाम को एक दिन अपने घर खाने पे बुलाया. His wife was horrified at the idea. उसकी वाइफ तो बहुत घबराई हुई थी कि मुस्लिम बच्चे को अपने घर में अपनी शुद्ध शाकाहारी किचन में मैं कैसे इनवाइट करूं. Then Shiv Subramanyam Iyer served Kalam food with his own hands. तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने खुद से अपने हाथों से उसे खाना परोसा and sat down beside him to eat his meal. और उसके साथ बैठ गया उसके साथ खाना खाने के लिए. The next time he visited Kalam to his home, तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी वाइफ को कन्विंस कर लिया था and he was successful in that when next time he invited Kalam to his home, जब next time उसको दोबारा invite किया गया, then Subramanyam Iyengar's wife served him food with her own hands inside the kitchen. सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ ने खुद से अपनी किचन में अंदर ले जाके उसको खाना परोस कर दिया. Nextly we do have, why did Abdul Kalam want to leave Rameswaram? वो रामेश्वरम क्यों छोड़कर जाना चाहता था? So here we do have the answer. Abdul Kalam wanted to leave Rameswaram because he wanted to study at the district headquarters in Ramanathapuram. वो रामेश्वरम छोड़कर इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वो अपनी आगे की हायर एजुकेशन रामानाथपुरम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में करना चाहता था. Secondly, what did his father say to his अब at that reaction कि वो यहाँ नहीं रहना चाहता, he wants to go somewhere else for their further studies. So what was his father reaction? His father said, Abdul, I know you have to go away to grow. ग्रोथ के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं जानता हूँ. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? क्या सीगल उड़ना नहीं सीख सकती सूरज के चारों ओर अकेली और बिना नेस्ट के? बिल्कुल सीख सकती है. So you should also go and prove yourself. Now thirdly, what do you think his word means? Why do you speak? Why do
why do you think he spoke those words? आपको क्या लगता है उन्होंने ये वर्ड्स क्यों बोले होंगे? His words meant he understood that Kalam had to leave his house and get a higher education to grow. उसके वर्ड्स का कहने का मतलब है, समझ गए, कि कलाम अपने घर को छोड़कर जाना चाहता है हायर एजुकेशन के लिए, ग्रोथ के लिए. Now he spoke these words because he knew the harsh reality of life. उसने ये वर्ड्स बोले क्योंकि वो जानता है लाइफ की हार्श रियलिटी क्या है. That the children needed to move away from their home. कि बच्चों को ज़रूरत है to move away from their home, अपने घर से बाहर जाने की, and parents to make a career and earn. और पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेवारी है उनका करियर बनाने की और उनकी इनकम का सोर्स इंक्रीज करने की. Nextly, thinking about the language. Here we have discussed about some language concept, like find the sentences in the text where these words occur: erupt, surge, trace, indistinguished, and casuality. So sentence from erupt, sentence from surge, sentence from trace, and sentence for indistinguished. You can learn the spellings or sentence formation from here also. Nextly, question number one, what are the things that one erupt use examples to explain the various meanings of craft? Why are the things that can erupt? चीजें erupt हो जाती हैं. So things that can erupt are volcanoes, इमोशंस एंड एंगर. ये चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ खराब कर देती हैं, डाटा को, हमारी नॉलेज को, हमारी फीलिंग्स को इरप्ट कर देती हैं. volcanoes, emotions and anger. A volcano erupted in the Moina Key last night. Ranjan's anger erupted as a result of Ashima's continuous nagging. And things that can surge, जो उसको सर्च करती हैं, prices, cave, crowd, storm, etc. Now question number 2. What are the meanings of the word trace and which of the meanings is closest to the word in the text? So the meaning of the word trace means to draw an outline, to copy and to find out. These three words are there, and the meaning is finding out. Trace means finding out. Nextly, can you find the word indistinguished in your dictionary? And if you learn the word distinguished and say what undistinguished must. So no, I cannot find the word undistinguished in my dictionary. The meaning of the word distinguished as given in the dictionary as specific, but undistinguished just mean not specific and not important. We can say that. Now match the following. Broke out means chida hona, yudh ka chid jana. So what do you understand? Like begin suddenly in a violent way. Accordance with means according to the system. Helping hand means help करना यानी कि assistance रखना. So could not stomach नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा. So it was not able to tolerate. Nextly, generosity of spirit, attitude of kindness, figures of authority, person with power of make decision, person जिनके पास decision लेने की power है. I hope you will understand it. Okay, till here, you just revise and we will meet in our next video. Okay, so thank you. Have a nice day.